Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cognitive Coders, and today in this Python video series we will learn how to use the flatMap function in Spark RTD. Okay, so basically it's like a map function which we have seen in our last video. flatMap function भी only RDD object में ही यूज होता है, ठीक है। आरडीडी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फ्लैटमैप फंक्शन का यूज होता है। यू कांट परफॉर्म इट इन एनी काइंड ऑफ पाइप और डेटा फ्रेम। ओके, तो बेसिकली फ्लैटमैप फंक्शन क्या करते हैं वो मैं उसको बताऊंगा। आई थिंक यू हैव सीन माय अर्लियर वीडियो in the export function video which I have already uploaded here. Okay, the export function video, please go and watch that video before seeing that video where I have already discussed that how to work the export function कैसे work करते हैं वो मैंने already बता चुका हूँ पहले। तो डेटा फ्रेम में ये सेम ऑब्जेक्ट को बेसिकली एरे डेटा फ्रेम में डेटा को कैसे फ्लैट करते हैं वो हम लोग करते हैं बेसिकली एक्सप्लोर फंक्शन के यूज करते हैं। पर ये आरडीडी में आरडीडी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आरडीडी इज नथिंग बट ए लिस्ट ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आरडीडी में कैसे एरे को फ्लैटन करते हैं वो वाला हम यहाँ पे देखें, ठीक है। तो पहले तो हम लोग अपना प्रोग्राम पे चले जाते हैं, ठीक है। So I have already created one RDD. You can see here. Okay. So if I will use here the map function, like in my earlier video. So what we try to each and every item here. Okay. We can do one thing directly. We can use the map function here to see the map function what will return। map function की यूज करके क्या रिटर्न मिलेगा पहले देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरा है विराट कोहली एक पूरा नाम है, रोहित शर्मा पूरा नाम है। तो अभी हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो मैप फंक्शन यूजिंग मैप फंक्शन we will get the lambda function access। so using lambda function we can pass each and every RDD object through the lambda function and we can perform our operation whatever we need। तो हम लोग ऐसे करेंगे। जो मैंने ऑलरेडी ये मैप फंक्शन के यूज मैंने मेरा अर्लियर वीडियो पे दिखा चुका हूँ, लास्ट वीडियो पे। तो प्लीज गो एंड वॉच इट, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, वो वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा कोई भी एक वेरिएबल लो, इसके बाद वो वाला वेरिएबल से जो डेटा आएगा वो उसको स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट फंक्शन का यूज कर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस स्पेस चार्ज यहाँ पे है, वहाँ से स्प्लिट होगा, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? आरटीडी वन क्या रहा है? आरटीडी वन सॉरी मैप फंक्शन का तो मैप फंक्शन और इंडेंटेशन so you can see okay। so here I'm getting the error। so why I'm getting the data multiple times, two times? We should get the data only for Virat Kohli and then Rohit Sharma, but we are getting once again another RTD। so we are getting here because of this, because I'm once again
collecting the data. Okay, the same data once again I'm collecting. So that's why I'm getting it. Okay, that's why I'm creating. तो उससे रन करते हैं, क्या इशू है? चलो देखते हैं इशू क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, पहले यहाँ पे कर चुका हूँ, तो really important है। Now we are getting the data. Okay. तो यहाँ पे पूरा तो एक इशू आ रहा है कि ये पूरा आरडीटी में अभी नहीं आया है। लेट मी चेक वन मिनट। ओके, तो not use the map function. Why? Because I'm not taking here the new RDT variable. अब यार, तो ये डेटा मैप फंक्शन के तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर फ्लैट मैप को यूज करेंगे तो ये एक एरे का जो ऑब्जेक्ट है उसको फ्लैटन करेगा, फ्लैटन करके एक एक रो बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक डेटा को एक एक रो में एज एन एरे ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा था बिकॉज ऑफ आरडीडी मैप फंक्शन के थ्रू, मैप फंक्शन के थ्रू स्प्लिट करके, ठीक है। तो अभी अब फ्लैट मैप जब यूज करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग अगर सेम डेटा को फ्लैट मैप के थ्रू यूज करवाते हैं तो क्या होता है। Okay, so flat map, then I need it to frequency। जितना भी तुम्हारे पास यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद जितना डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो एक एरे में, एरे के अंदर में जो एलिमेंट है वो सबको यहाँ पे अलग अलग करके एज ए रो यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ओके, so flat map is basically flatten the array। तो बेसिकली फ्लैट मैप का फंडा यही है। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। प्लीज गो and watch this video multiple times so that you will get some more understanding, and also please do the hands on is pretty much required to remind it this functionality or and all। Okay, and also, if you are not able to understand the map function, please go and watch my map function video. Okay. And also the RTT video. These two are the prerequisite for this video, I can say. Okay. And if you like my video, please do like, share, and please subscribe my YouTube channel. Okay. Please do like, share, and comment. Okay. Because uh, it will recommend the video much more time by YouTube. Okay, so that whoever the needy person who needs this video for learning purpose, they will get it. Okay, and also please share with your friends so that they will also get the benefit. Okay, thank you for watching my video. Okay.